तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बायजूस एग्जाम प्रेप गेट एंड ईएसई सिविल मैकेनिकल एंड एग्जीक्यूटिव चैनल पर। आज की सुबह एक आम सुबह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के ऑल इंडिया रैंक 14 शजर। और उसी के साथ सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को बता दूं भाई कि फुल पावर के साथ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और आपके जितने भी सवाल हैं सुबह सुबह देखो मैं डिस्टर्ब करके लेके आया हूँ शजर जी को अपने साथ, कि वो सारे आपके जो सवाल है उसका जवाब दे दें, सो दैट आप भी उनकी तरह ये सुबह का जो एक्सपीरियंस है वो ले पाओ। सो सबसे पहले पूरे बायजूस एग्जाम टीम की तरफ से शजर आपको और आपकी फैमिली को कांग्रेचुलेशंस। ये एक ऐसा अचीवमेंट है आई थिंक जो हर इंजीनियर जीना चाहता है अपनी लाइफ में, एंड यू आर लिविंग दैट डे, राइट। सो सबसे पहले तो शजर कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम ऑन बायजूस एग्जाम प्रेप प्लेटफॉर्म। Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Right. Thank you for this session. Yes. So thank you so much for coming. Okay. So yes, we'll be beginning the questions. हम questions start करेंगे. Yes, there are both the students here who are understanding only English, और वो वाले students भी हैं जो सिर्फ हिंदी समझते हैं. So we'll try to keep the session in bilingual language, and everyone will be comfortable, right? So Sure, sir. Sure, sir. let's start with every boring interview that with the very first boring question. So can you please tell us about yourself, about your schooling, about the BTech college, and what you are doing right now? ये कुछ सवाल है, आपने स्कूलिंग कहाँ से करी, आपका बीटेक कहाँ से था, और अभी आप क्या कर रहे हैं? अगर आप शेयर करेंगे तो स्टूडेंट्स को आपके थोड़ा बैकग्राउंड जान के समझने में आसानी होगी आपके आगे की जर्नी को। शजर प्लीज। सर, मेरा नाम शजर है and I'm from Prayagraj, Uttar Pradesh. I did my schooling from St. Joseph's College in Prayagraj, and thereafter I did my graduation in civil engineering from AMU Aligarh and passed out in 2020. Thereafter I prepared for this examination dedicatedly for 1 year from 2020 to 2021. Okay. And during my college also I gave one attempt, and after that was my second attempt. And second attempt I reached an interview stage, could not get into the final list, and after that I took admission in MTech in environmental engineering. Currently I'm pursuing in MTech in environmental engineering, and this was my technically my third attempt, and preparation wise it was second attempt. And luckily I got AIR 40 this time. Nice. It's not luck. Yeah, somewhat luck, but most of your hard work, and I will say consistency and the persistency, right? कि अगर 3 साल तक अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, that basically means कि आप persistent तो हो, कि आपने सोच लिया कि यही करना है, then you have done it only. किसी और रास्ते पे आप जाने की कोशिश नहीं की है. That's very good actually. That is something which we always tell to the other students as well. तो देखिए, जब कोई ईएसई में ऐसे रैंक लेके आता है ना, तो स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है, यार इसने ना गेट की भी प्रिपरेशन की होगी। तो व्हाट इज योर गेट एक्सपीरियंस? आपने गेट एग्जाम दिया था, या अगर दिया था तो व्हाट वाज योर रैंक, इफ यू वांट टू शेयर विद द स्टूडेंट्स? यस सर, मेरा टारगेट था कि मैं सिविल इंजीनियरिंग को अच्छे से करूं, एज अ सब्जेक्ट्स अच्छे से करूं. माय मेन एम वाज इंजीनियरिंग सिविल एग्जामिनेशन. And sir, I did give GATE, but not a very good rank. I got 820 rank. Okay. 820, not fair to get a PSU. So from that I got admission into an MTech program. So that was experience, and that was it. राइट. अच्छा, तो इस बार आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है लाइक प्लान्ड वे में कि आपका जो गेट का एग्जाम है इंजीनियरिंग सर्विस उसके बाद हो रहा है, लाइक जस्ट अ वीक अवे, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, दूर भी नहीं है. और जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी तैयारी करना चाह रहा है, 2024 की बात करते हैं, 23 तो पास ही आ गया, उसके लिए कुछ इंपल्सिव क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के पास जो मैं आपसे जरूर पूछूंगा. और एक क्वेश्चन है जो मेरे छोटे भाई की तरफ से आपके लिए, क्योंकि उसको पता चला कि आई विल बी इंटरव्यूइंग वन ऑफ द यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज इंजीनियरिंग टॉपर. तो उसने मुझसे पूछा कि आप ये पूछना उनसे, बिकॉज ही इज ऑल्सो परस्यूइंग, ही इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. ही इज 4 ईयर यंगर देन मी. तो सबसे पहली चीज, तो आपने जो प्रिपरेशन करी, जनरली पर्सपेक्टिव होता है स्टूडेंट्स के माइंड में दैट गेट की प्रिपरेशन एक अलग सेगमेंट में चली जाती है और इंजीनियरिंग सर्विसेज की एक अलग सेगमेंट में चली जाती है. बट बिकॉज आपने दोनों ही एग्जाम को अटेम्प्ट किया, हम तो बहुत बताते हैं कि भाई ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है,
बट व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव एक मेजर डिफरेंस इन दोनों चीजों को जो अलग करता है, एंड एक ऐसी चीज जो आपको रैंक दिलवा सकती है इन दोनों चीजों में इफ यू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट प्लान? मतलब व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू फेल्ट ESE सर and GATE? ब्रॉड डिफरेंस तो मैं नहीं कह सकता इज देयर इज एनी वेरी ब्रॉड डिफरेंस. द स्ट्रैटेजी इज सेम. यू हैव टू cover your entire syllabus, solve the question, solve the PYQ of both this examination. Then the difference come when the exam approaches. So the fine tuning of the examination comes before a month, for maybe for GATE 1 or 1.5 month. From that time you can fine tune your preparation for GATE, give the mock test series, whatever, work on your accuracy, which in my case I lacked very I lacked very much. My accuracy was very bad, I would say. Okay. So for GATE you have your accuracy should be perfect, and that can come with practice, with more and more practice. Right. For engineering service examination, yes, accuracy is good, is required, very much required, but the difference lies that engineering service examination requires a wide coverage of the subject and revision. Revision in both the exam is required, but the coverage in engineering service examination becomes more voluminous. The syllabus as it is vast, very vast, and as compared to GATE. So this is a difference only. The ESC is a vast syllabus, so it requires more revision time. GATE is a concise, a crisp examination, so it requires, I would say, practice, and some of your IQ will also help in GATE, and that is the thing. Aptitude के नाम में लिखा है. Yes, so there is this theory also, है ना? तो अभिनव सर की एक थ्योरी है इस चीज को लेके, डिफरेंसेस को, जो आपने कहा एक्चुअली उसी चीज को प्रूव करता है कि गेट क्या है ना, वो एक वर्टिकल डेप्थ पे काम करने वाला एग्जाम है कि आपको सब्जेक्ट की डेप्थ में जाना पड़ेगा, और इंजीनियरिंग सर्विस आपको वाइड उसमें जाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल. सो इट्स जस्ट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ सिलेबस, राइट? सही है. सो इज देयर एनी अदर एग्जाम गेट और ES के अलावा जिसके लिए आप प्रिपेयर किए या फिर यू हैव अपीयर्ड? Yes, sir. I appeared for a state service examination from UPSC. So there were two examinations when we were preparing for this. There were two, one polytechnic lecturer examination and one assistant engineer examination. So in polytechnic lecturer examination, I cleared that examination with rank 18 rank, and in UPSC AE exam, assistant engineering examination, I could not get into the final list. I reached till interview. So that was the other examination which I apart from that, one SSC junior engineering examination. You appeared for that? I got MES military training service examination, junior engineer post. So that was other than these two exams, there were 3 examinations which I appeared. Great, yeah, सही है. तो coming back to my favorite question, result आया है ना, and who told you first of all that भाई result आ गया, check this out? And once you saw the result, एक बार आपने result देखा, then who was the first person जिसको आपने बताया that okay, this is my result, and what was their reaction, and how about your family's reaction? Like, this is my favorite question all the time. Okay. So it was around 3, I suppose, yesterday. So I had gone to a Xerox shop to get some printing material done. So when I was there, I was searching the PDF to get it printed. Eventually, I got that someone in a group has posted that result declared. This is the final. Then I stopped the Xerox shop. मैंने कहा कि please अब नहीं कराना print, बाद में कराऊंगा. I stepped out of the shop and very shivering. I thought कि मैं खोलूं होगा कि नहीं होगा. So मैंने कहा let's open it. So in the first, second, third, fourth, sixth number, my senior Hasib bhai was there. After that, my name also there. Then I cried a bit, just for a second, and I called my mother. So when I called her, then I said, "Ma'am, ho gaya mummy." This then she said, "What kya ho gaya?" Then I said that ESE 2022 ho gaya. So then she also cried, and then thereafter I tell my father, my 2 elder brothers. So they were also very happy, and that was it. So that 3 p.m. was the time. How sweet. Say yeah. Good. After that, my friends were there. So both friends, family, your peer group plays a very vital role in supporting you both psychologically
and as such journey is a bit long in this. That is one of the thing which with which aspirant has to live. कि एक लंबा time तक you have to do the same thing, same routine like this, right? So earlier I was talking about one of the question that my brother wanted to ask you. So it's that कि because his journey is also very long, right? Civil services तो सब जानते हैं, right? So he wanted to ask you that obviously when you study for a long time, जब बहुत ज्यादा वक्त तक आप पढ़ते जाते हो, तो एक वक्त आता है जब आपको मन नहीं करता, आपको लगता है कि यार नहीं अभी बोर हो गया या जो भी है मन नहीं कर रहा. But back in the mind, since you are sincere student and since you are mature also by that age, you know this that you need to study. There is nothing that you can't do without studying this thing, and you have come so far from the beginning that now it's not the time when you can go back. सो हाउ डू यू डील विद दैट टाइम? ये मैं सब बच्चों के लिए डाउट पूछ रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे इस सेशन को अभी या बाद में, कि जब भी हम पढ़ते हैं लंबे वक्त तक तो हमें मतलब एक टाइम आता है मन नहीं करता पढ़ने का, लेकिन हमें ये भी पता है कि पढ़ना तो पड़ेगा. सो हाउ यू यूज टू डील विद दैट पर्टिकुलर टाइम और द कंडीशन? सो सर, जब मैंने डिसाइड कर लिया कि ये करना है, ये एग्जाम देना है, तो सर ऑब्वियसली सर द जर्नी इज वेरी लॉन्ग. देन सर व्हेन आई टोल्ड, जब भी सर अप्स एंड डाउन्स तो ऑलवेज वर देयर. सो देन माय brothers, my family, my friends always used to say one quote that if you want to do it, you will find a way, else an excuse. So that inspired very much to me. Then sir, there were two pillars: my friends, my family, who I would say the founding pillars of this journey. And sir, जब भी मैं ups and downs थे, तो मैं अपने peer group जो which are among whom we shared the same goal, the same exam we shared, उनसे मैं डिस्कस करता था, या मैं उन फ्रेंड्स से भी बात करता था जिनसे मैं जो इस एग्जाम से प्रिपरेशन नहीं करते थे, तो वो भी मेरे बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर कहूँगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, द फैमिली रोल्स आल्सो प्लेज अ very vibrant role in this exam. So psychological support is very much in any of the examination. Correct. That's just like a pillar, like this is support you are having already. Nice. One very practical problem that from last 4 or 5 years students have started facing is social media. So was that also a problem for you? Like आपके लिए था वो distraction, and if था तो how did you like deal with this? Yes, social media is indeed a distraction. मतलब if you take it to that way, तो खैर although मैंने अपना कोई अकाउंट अनइंस्टॉल या डीएक्टिवेट नहीं करा था, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम आई वाज एक्टिव, बट सर एक अपने आप को एक बैरियर बनाना पड़ता है खुद से ही कि नहीं, अब हो गया, अब नहीं फोन यूज करूंगा, अब पढ़ाई करूंगा. या कभी मैं कोई लेक्चर ऑनलाइन देख रहा हूँ तो मैं मोबाइल को फ्लाइट मोड पे कर देता था. सो इसको करना पड़ता है. या कभी कभी व्हाट्सएप स्टेटस को म्यूट कर देता था कि मैं सिर्फ अपने उन स्टेटस देखूं जो मेरे फ्रेंड्स से, जो मेरे प्रिपरेशन वाले फ्रेंड्स से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा मैं उस साइकिल में इन्वॉल्व रहूं. सो मैंने स्टेटस कुछ आप म्यूट रखे थे, या तो बस ये था चीजें. कुछ ऐसे एप्लीकेशन जैसे कि इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, तो मैंने उसको हाइड कर रखा था ताकि मैं उसको खोलूं ना, अर्ज ना हो. अगर उसको खोला तो बहुत टाइम लग जाता है उससे बाहर आने में. तो yes, they are a hurdle, but eventually they also play a very vital role in exchange of ideas, exchange of doubts. They also play, be Telegram or any of this platform. So it depends upon us how we make use of this technology in a vibrant way, or eventually we can. ओके नहीं. सो यार ये मतलब ऐसा होता है कि हाँ हमें व्हाट्सएप की रिक्वायरमेंट भी है, बट उससे डिस्ट्रैक्ट भी होना है, हो जाएंगे. सो दैट इज द रीजन व्हाई लॉट ऑफ स्टूडेंट हैव दिस डाउट. अपार्ट फ्रॉम दिस, सिंस देयर आर ओनली 43 or 44 days are left, and there is something associated with engineering service, and the students are still not accepting it. And that is the non-tech syllabus of engineering service examination, which is the paper 1 of prelims, right? So how did you dealt with it? And if specifically I talk about, I'll be asking you regarding current affair.
that what was your strategy regarding the current affair and how did you deal with the entire syllabus and how was your paper one went like this year 2022 कैसा गया था आपका paper one? Sir, compared to 2021, this year I found a bit more difficult, on a more difficult side. सो पेपर में इस बार करंट अफेयर्स लास्ट ईयर भी था और इस ईयर भी काफी थे। तो सर करंट अफेयर्स स्पेसिफिकली बात करें तो मैंने कोई मैगजीन या कोई न्यूज़पेपर रीडिंग मटेरियल डेली न्यूज नो प्रॉब्लम, आप आराम से अनम्यूट कर लो। हाँ जी। यस सर। तो मैंने कोई करंट अफेयर मैगजीन, डेली मंथली करंट अफेयर मैगजीन या न्यूज़पेपर फॉलो नहीं करा था फॉर करंट अफेयर। व्हाट आई डिड दैट बिफोर 2 months ऑफ द एग्जामिनेशन some materials are already made available for the entire year, around 100 pages it is of any other printed or handwritten जो मिल जाए। तो मैंने उसको ही अपना बना लिया था कि उसको ही पढ़ना, अगर इसके डोमेन के बाहर आता है तो मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा या मैं एलिमिनेशन करूंगा, अगर 2 ऑप्शंस अगर एलिमिनेट कर पाया तो, वरना आई विल लीव दैट क्वेश्चन। करंट अफेयर इट विल in rare case it can exceed 10 questions, although this time it went around 15 or last year 17 also questions did के। बट हम उसे ऑल्दो सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं कि आप अटेम्प्ट कर ही सकते अपने मटेरियल से, कुछ तो आप एलिमिनेट कर देंगे, कोई टू द स्लिम क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है बीट इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। सो करंट अफेयर उसके बनस्बत सर वी कैन डू मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, environment, then there are some for civil engineers we can do project management which we also study in a technical subject. For branches like electrical or other, they have material science as their subject. For mechanical there are quality and practices. तो उन सब्जेक्ट्स को ऊपर आप कमांड कर लीजिए, उनके ऊपर आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं instead of relying giving more and more time for current affairs. Okay, nice. And what was your strategy in the last month, since it is almost last month only for the students, so everyone is already asking us कि अभी आखिरी महीना चल रहा है, क्या strategy रखें, नहीं समझ आ रहा, focus test series पे ज़्यादा रखें या revision करें, that is a dilemma in between their mind. So what's your strategy कि मतलब series should be done? हाँ सर, अब कोई नया टॉपिक नहीं करना चाहिए, जितना हो गया सिलेबस सबसे पहले उसको फुल स्टॉप कर देना, बस यही मुझे इतना ही आता है। अगर इससे आ गया इस डोमेन पर एक्यूरेसी मैंने अच्छी कर लिया, मे बी इफ इट कैन रीच 80% 90%, देन थिंग्स विल बी इन योर फेवर। तो आप सबसे पहले अपना सिलेबस, अपना जो मटेरियल है वो आप कन्फाइन कर लें, अब इसके आगे नहीं पढ़ना। अब सेकेंड पॉइंट आया टेस्ट सीरीज। अगर आपने रिविजन अच्छा कर रखा है तो डायरेक्टली गो फॉर टेस्ट सीरीज, नहीं तो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट उठाइए, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, नहीं आए तो क्वेश्चंस के थ्रू आप पीछे जाइए कि अच्छा मैंने कंसोलिडेशन का चैप्टर सॉइल से मेरे क्वेश्चंस ये नहीं आए हैं तो मैं ये फॉर्मूला देखूंगा, फिर मैंने स्टील का या मे बी मुझे ये फॉर्मूला नहीं आया, या हाईवे का या ये नई वैल्यू, एनवायरनमेंट की कोई परमिसिबल लिमिट मैं भूल गया तो मैं उसको चाहूँ तो एक जगह लिख लूँ, नहीं तो मैंने जो क्वेश्चंस है उसको मैंने मोबाइल अपने फोन में एक किसी कैम स्कैनर में, किसी स्कैनर से हम स्कैन कर लें उन क्वेश्चंस को, लिखे नहीं अगर टाइम नहीं है तो उन क्वेश्चन को करते करते अराउंड वी कैन हैव 100-150 क्वेश्चंस इन अ पीडीएफ ऑफ अराउंड 60 पेजेस पीडीएफ। तो वो पीडीएफ हम बिफोर अ वीक हम उस पीडीएफ को रिवाइज कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन टेस्ट में जो मैं नहीं कर पाया, जो आसान क्वेश्चन है, जो फैक्चुअल क्वेश्चन जो हमें आते हैं वो मैं बात वहां पे ही कर लूंगा, जो क्वेश्चन मुझे फंसे हैं जो नहीं सॉल्व कर पाया तो मैं उन पे फोकस करूंगा, मैं उनको करके उसको शॉर्टन कर लूंगा ताकि मेरा बर्डन लास्ट में कम हो जाए, क्योंकि खूब सारे क्वेश्चंस आप 2-3 टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हैं फॉर प्रैक्टिस तो मे बी 3000 और 4000 क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो पूरा करना इट इज नॉट वाइज। तो आप कट एंड शॉर्ट कर सकते हैं टू 10% कि हाँ 10% क्वेश्चन ऐसे हैं कि मुझे ये इसको मैं 2 दिन पहले रिवाइज करना है तो उसकी मैं मोबाइल में पीडीएफ बना लूँ। और फॉर प्रीलिम स्टेज ओएमआर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो हम ऐसा कर सकते हैं कि पीवाईक्यू प्रिंट आउट कराते हैं,
पुराने एज इट इज क्वेश्चन प्रिंट आउट कराते कि हमें एक फील आ जाए 2017 से लेकर 2001 अब तो 22 तक हो गया, 5 साल के की प्रिंट आउट कराया और सेम एनवायरनमेंट में हम उसको देते हैं ओएमआर में, क्योंकि ओएमआर में भी क्या क्या कभी होता है। मैं भी अभी मुझे याद है कि एक क्वेश्चन था जो मुझे आता था, मैंने एक दूसरा ऑप्शन फिल कर दिया। तो वो ओएमआर प्रैक्टिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस द टाइम इज व्हिच इज लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। तो अभी तो यही है कि टेस्ट, OMR practice and revision. So you can divide the time in 4 hours, 4 hours as it is. What is it comfortable to you? लेकिन revision आप अपना 10% of your time हमेशा रखिए। एक सवाल जो हर स्टूडेंट के दिमाग में अभी कि शाहजार आप कितने घंटे पढ़ते थे, ये ऐसा सवाल है सबके दिमाग में होता है। आप पर डे कितना घंटे पढ़ते थे? सर इसकी कोई अपर लिमिट नहीं करनी चाहिए मेरे ऊपर, या जैसा आपका पोटेंशियल, जैसा आपका ग्रास्पिंग पावर है। अगर आप कोई चीज, एक टॉपिक आप 1 घंटे में कवर कर ले रहे हैं तो वेल एंड फाइन। अगर आपको 2 घंटे लग रहे हैं इनिशियली तब भी वेल एंड फाइन। अगर वो 2 घंटे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो खुद ही अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे तो इवन लेस देन 1 आवर। सो रिविजन सर तो कोई अपर बाउंड, कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाना है कि इतने घंटे पढ़ेंगे तो इतना सिलेक्शन होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप हाँ, दैट इज इट। सही। आपको अच्छा, टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, आपके क्वेश्चंस सॉल्व होने चाहिए, आपके एनालिसिस जो है जो टेस्ट सीरीज या पीवाईक्यू का वो हो जाए तो दैट इज फेयर एनफ, योर वर्क इज डन। करेक्ट। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के रिजल्ट आने के तुरंत बाद पैदा हो जाता है, एंड दैट इज कि आपका आगे जाकर के सिविल सर्विसेज के लिए कोई प्लान? कि सिविल सर्विसेज भी आई विल गिव बिकॉज नाउ आई थिंक यू हैव रिलैक्स्ड, you have got a support, a very strong support, you are not going down। मतलब ये केबीसी वाला वो पड़ाव है कि इतना तो लेके जा ही रहे हो अभी, है ना, इससे नीचे नहीं जाएगा, इतना तो मिल ही रहा है आपको। बट व्हाट अबाउट 7 करोड़ वाला सवाल, वुड यू लाइक टू टेक इट और व्हाट? Sir, I am yet to discover that, so I'll take some time to discover on it. राइट। इन कमेंट बॉक्स आल्सो ना किसी ने पूछा व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान कुछ नहीं है अभी, ही इज गोइंग टू एंजॉय, दैट्स द ओनली फ्यूचर प्लान ही शुड हैव। अभी कुछ नहीं, जस्ट एंजॉय योर लाइफ, ठीक है, उतना लाइक व्हाटएवर यू विल बी लाइक अचीविंग ना, you will again after some year feel like I'll be achieving something more as well when you will live your life. Yes sir, there is one quote also I came across during my preparation, that to stay rooted and keep growing, so the growth is never ending, so that is it. Exactly, मैंने तो नहीं लिखा ये। No, just kidding. Okay, so I am also from AMU in final year. Mohammed Shahroz has said this. Okay, so alumnus meet हो गया यहाँ तो, great. अच्छा, and what was the biggest challenge? Like there are multiple challenge that we all know कि बहुत सारे challenges होते हैं हमारे preparation के दौरान, but सब क्योंकि हर इंसान अलग है तो उनके लिए उनका level of challenge accept करने का level भी अलग है. So what was your biggest challenge? Like if I talk in terms of technicality, like what was your fear? For example, something which is too conceptual or the factual data or these assumptions and all these things that you need to remember all the time. What was your fear? What was your challenge basically when you were preparing? Yes sir. Sir, taking the numerical question type consideration, sir, design question में मैं comfortable था, मैं design question अच्छे से कर लेता हूँ. Coming to the part of subjects like structure analysis, sir उसमें कुछ challenge थे. उसमें sir जो questions होते हैं around 20 marks के आते हैं mains में, around on an average 80 to 100 marks का सर वेटेज होता है पेपर 1 में फॉर स्ट्रक्चर एनालिसिस. ऑल्दो दिस टाइम थोड़ा कम था सर, उसमें मेरा आंसर कभी मैच नहीं करता था. और वो मेरे साथ अकेले नहीं था, वो पुराने जो बच्चे थे, जो मेरे सीनियर्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, उनके साथ भी था कि आंसर ही मैच नहीं करता था और मार्क्स नहीं, कम नहीं मिलते या मिलते ही नहीं, अब पता नहीं उसमें मार्किंग कैसे होती है. तो सर उसमें ये था कि मैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के क्वेश्चंस को सर मैं करता था कि मैं आधा ही घंटा एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या जितना हो पाए अटेम्प्ट करूं ऑन अ डेली बेसिस. तो सर जैसे जैसे मैं करता था तो वो मेरी जो एक्यूरेसी थी वो
टू बी फॉर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस वो हमेशा आते हैं, मतलब कभी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, कभी स्लोप डिफ्लेक्शन आ गया, अराउंड मतलब रफली वेरी करते हैं। तो उन दो क्वेश्चंस में हमेशा सेट क्वेश्चंस है, अगर मेरी एक्यूरेसी ठीक है, टू द पॉइंट आंसर्स आ रहे हैं, तो हमें मुझे फुल मार्क्स मिल ही जाएंगे। डिजाइन क्वेश्चंस में क्या होता है, आप स्टेप सही है लेकिन उसमें पूरे मार्क्स शायद नहीं मिलते होंगे मुझे लगता है। तो एनालिसिस वाले क्वेश्चन स्कोरिंग है बस, उसमें सर ऑन अ डेली बेसिस अगर एक ही सवाल अगर हम जब रोज प्रैक्टिस करें तो वो ठीक हो जाए। कमिंग टू द पार्ट ऑफ थ्योरी पार्ट, सर थ्योरी पार्ट में लोग बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स बना लो, खैर शॉर्ट नोट्स इज वेरी गुड एंड इट इज वेरी वाइटल, बट सर मैं अपने नोट्स को ही काफी बार रिवाइज करने की कोशिश करता था कि मैं उसी में हाईलाइट कर लूँ। उसके बाद जब मल्टीपल रिविजन कर लूँ, उसके बाद अगर तब भी नई चीज याद हो रही है, कुछ वैल्यूज है, फॉर एग्जाम्पल फैक्चुअल नोट्स में सर एनवायरनमेंट की अपर लिमिट्स, कुछ इक्वेशंस, या आरसीसी में सर कुछ डिजाइन वैल्यूज होती हैं, कुछ कर्व्स होते हैं SP60 वैसे वाले, उसमें अगर कर्व की वैल्यू पूछ ले, लॉन्ग कॉलम का जो फॉर्मूला होता है वो, अब तब भी रिवाइज तब भी नहीं होता, उसके तब जाके शॉर्ट नोट्स, क्या मैं कहूँगा माइक्रो नोट्स बना ले, वो बेहतर है तो वो अच्छा रहता है। हाँ सर, आफ्टर रिविजन के बाद भी फुल नोट्स के बाद तब भी वो वैल्यू भूल जा रहे हैं, तो करेक्ट दैट इज आई थिंक नीड उस टाइम का न्यूमेरिकल पोर्शन, थ्योरी पोर्शन। एंड व्हाट्स योर टेक ऑन शॉर्ट नोट्स? लाइक अगर किसी ने अभी ना बनाए हो 2023 के लिए, वो अपीयर होना चाह रहे हैं, सो मतलब एक वर्ड होता है फोमो, आपने सुना होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सर ये तो बहुत ज्यादा फियर देखा साथ वाले को तो उसने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने तो नहीं बनाए हुए, तो अभी लगता है कि यार उसके पास कुछ तो एडिशनल है, तो ही और शी इज गोइंग टू बी गेट अ गुड रिजल्ट और अ बेटर रिजल्ट देन माइन, तो मैं भी कर लेता हूँ या मैं भी बना लेता हूँ। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, जो आजकल बड़ा फोमो है स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग दिस? सर टाइम तो हाँ, नहीं है, अभी टाइम तो नहीं है, और कभी कभी हो सकता है कि मैं उसके ही नोट्स उसका फोटोकॉपी करा लूं, उसी को पढ़ लूं। तो मेरे हिसाब से सर अगर आपको कंफर्टेबल है दूसरे हैंडराइटिंग पढ़ने में तो ठीक है, लेकिन सर मैं अपना चीज बताऊं कि मैं अपना ही लिखा हुआ हो या प्रिंटेड हो, दैट वो मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल होता था रिटेन करने में, मेरी साइकोलॉजिकल जो मेरी सबकॉन्शियस मेमोरी है तो उसमें जल्दी फीड अप होता था अगर मेरे हैंडराइटिंग नोट्स हैं। तो अगर शॉर्ट नोट्स मैंने नहीं बनाए तो अब टाइम है नहीं, तो मैं अपने फुल नोट्स को ही मैं हाइलाइटर यूज करूंगा। तो मैं भी दो कलर के हाइलाइटर यूज कर लूं कि एक नॉर्मल चीजें जो मैं कभी कभी भूलता हूँ और एक जो हमेशा भूलता हूँ, कलर का वेरिएशन कर लें, तो मैं अपने मेन नोट्स में हाइलाइटर की हेल्प से अपना शॉर्ट नोट्स बना लूं अभी के टाइम पे, अगर टाइम कम है, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन समवन एल्स शॉर्ट नोट कि मैं उसके नोट्स पढ़ लूं, तो अपना लिखा हुआ सर ज्यादा सब समझ। तो हमारा स्पीड ऑफ रिवीजन भी हमारा सर काफी बढ़ जाएगा अगर हम ऐसा करते हैं। करेक्ट बिकॉज अभी और टाइम सर बचाना है। मिसिंग सम डिटेल्स हम भी से बच जाएंगे अगर हमने अपने मेन नोट्स को ही अच्छी अगर हाईलाइट कर लिया उसको, तो दैट इज करेक्ट। एंड हाउ यूज्ड टू डील विद द रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट? एक सब्जेक्ट हो गया, नाउ यू आर थिंकिंग चल भाई इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, तो आप उसको किस तरह से रिवाइज किया करते थे? व्हाट वाज योर अप्रोच? कि आप या तो नोट्स उठा करके उसको पढ़ना स्टार्ट करते हो, या आप क्वेश्चन सॉल्व करके उसको रिवाइज करना पसंद करते हो? सो व्हाट वाज योर अप्रोच टू रिवाइज अ सब्जेक्ट? सर जैसे अगर न्यूमेरिकल टाइप सब्जेक्ट है तो सर उसको तो क्वेश्चन के थ्रू ही रिवाइज करना ही चाहिए, करता था मैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डिजाइन क्वेश्चंस भी यस। हमको, मतलब पूरा पेपर वन हैज टू बी डन यूजिंग योर ओन हैंड फॉर, ऑल्दो सर प्रीलिम्स में हमको थोड़ा पॉइंट वैल्यूज याद होनी चाहिए कुछ, ताकि ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो। मैं मेंस की बात कर रहा था, तो अभी के लिए सर अभी उन क्वेश्चंस के लिए भी सर फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस को कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमें थोड़ा लिखना पड़ता है, तो हमें पेपर वन के जो सब्जेक्ट्स हैं न्यूमेरिकल टाइप के, उनको हमें प्रैक्टिस कर करके ही करना चाहिए, फॉर्मूला अगर हमें टू टिप्स याद हो। अब थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स पेपर टू जो है, जो मेंस वाले सब्जेक्ट्स हैं, तो लिविंग सोम एंड सर्वेइंग में और हाईवे में सब कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स अच्छे से आते हैं, तो उन तीन सब्जेक्ट्स के लिए भी फॉर्मूला प्लस शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला को अपने नोट से रिवाइज करिए, जो माइक्रो नोट्स बनाए हैं उनसे रिवाइज करिए,
और फिर उसके बाद कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सर कभी कभी कैलकुलेशन बहुत लेंदी होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि यार क्या करें, तो मैं एक एडवाइस करूंगा तो उन क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है प्रीलिम्स में 150 में से 150, आपको अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं जो एक्यूरेट अटेम्प्ट्स हो। तो इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन which has long lengthy numeric calculation, go for one which has easier calculation or which is a theory based question। उनको स्कोरिंग भी ज्यादा है, कम टाइम में हमें सेम मार्क्स दे देगा। ओके। तो ये था, तो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स के लिए प्रैक्टिस से ज्यादा हमारे नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिवीजन बढ़ जाएगा। हाँ। और सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हो पेपर 2 के, जैसे रेलवे एयरपोर्ट हाईवे, रेलवे एयरपोर्ट एंड इरिगेशन में सर कुछ लास्ट के टॉपिक्स है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, करेक्ट। रिवर ट्रेडिंग सर, उनको भी सबको कवर करना है, दैट इज द थिंग। इवन सर ओके। सब्जेक्ट्स लाइक टनलिंग एंड बोट डॉक हार्बर सर, उनको भी रिवीजन करना है उसका उसमें। तो ये अप्रोच है। राइट, बिकॉज एक बार लाइक यू हैव प्लान दैट कि ये मेरा गोल है, तो अभी कोई भी छोटी सी छोटी डिटेल भी यू कांट मिस, you have to take it into the consideration. Coming to the last question of the day, and then we'll say goodbye because you have a day to live. Yeah, so special day to live. So how was your experience with BYJU'S exam prep with our team and everything? If you want to share some. Yes, sir. It was a very good experience, sir. I appeared for mock interview also at BYJU'S Yes. exam prep center. And so the panel was very experienced, I would say. They were great. They were field experts. They were subject experts. All were there. It was a very heterogeneous panel, I would say. So the simulation was same as we see in UPSC examination, the main interview. So though the panel was very, they told the questions were also in line as I expected and as I actually got in the actual exam. Okay. Both technical and the practical and the related to my data, to my background from my study. So, and also the feedback which I got, I also noted it down. Also the recorded video which I got it, I revisited it. I found my mistakes where I lagged, where I could improve. So they were the things which I found very much good for this BYJU'S prep. Okay, great. You were saying something about, I think Abhinav sir told you something. I think Yes, sir. during the mock, what was that? Towards the end, that Abhinav sir, he said that just keep this momentum of yours, and you can do good. If no unexpected questions come across in the interview, as 200 marks plays a very great role. Even 1 marks can make you out of the list, and Correct. even good marks in interview can make into the final list. Although अभी marks तो भी reveal नहीं हुए क्या actual marks हैं, but sir 200 marks is very vital for this to get into the final list. Correct. So उसमें सर फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है, और उसमें मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम एक्चुअली जो एग्जाम फेस करेंगे उसको ही अगर सिमुलेट कर लेंगे तो दैट विल हेल्प अस। हाँ, whatever mistakes you are going to make in the examination, जो भी गलतियां वहां करने वाले हो, सारी गलती मॉक टेस्ट में कर जाओ and try not to repeat them. I think that's the mantra of any exam, I would say. All right, so it was great having you with us on BYJU'S exam prep. So enjoy and all the very best for the future. And this very best is not for anything related to career or anything like that. This is for the party that you are going to have, and also a good life, right? So you really worked hard. And obviously you are now the inspiration of a lot of students who are coming from a similar background that you are having. So I hope you will carry that thing also with you. If someone asks you that you can please help us with the strategy and all, so I hope you're going to give them the right direction, and you are right person to give that as well, right? Definitely. So, thank you so much, Shajar. It was really a great session with you. Let's meet sometime in personal as well for party. Okay. Thank you so much. Thank you so much for being here. Thank you. Okay, sir. Goodbye, sir. Goodbye.